We have understood which of. So today, what we are going to do is we are going to create strategies. All right. So before we move ahead, everybody is okay with the audio and the video? You can hear me properly and see me properly? Okay. Okay. Fantastic. Fantastic. All right. So today, let's speak about option strategies. ओके नाउ ऑप्शन स्ट्रेटेजीज जब हम बात करते हैं थोड़ा सा ऐसा लगता है कुछ कॉम्प्लेक्स होगा कुछ हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे ये करेंगे वो करेंगे बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑप्शंस राइट हमारे पास 4 ही ऑप्शन होते हैं वैसे तो 2 ही होता है कॉल और पुट लेकिन कॉल और पुट को हम बाय कॉल बाय पुट सेल कॉल सेल पुट 4 चीज कर सकते हैं so you can do only 4 things you can buy put you can sell call or you can sell put so there are only 4 things that can be done now this till now we have learned the science of it now what we are going to do is learn the art of it right so now we are going to get into the art of it as to which strike prices to buy which strike prices to sell right so which expiries to buy which expiries to sell how much quantity to buy how much quantity to sell when you have this kind of a flexibility you can take a lot of views on the market now this is what we are going to learn today okay because we have so much of flexibility in taking a view when you trade in stocks there is only one thing that you can do or 2 things that you can do you can buy the stock or you can sell the stock okay because you have only 2 views either the market will go up or the price will go down that's the only 2 views that you can take but here it is not so here you can take multiple views and multiple views may say 4 basic views is what you can take okay so when you say 4 basic views what are these basic views one is the market will be going up it will be bullish okay so when you have a view the market will be bullish you can buy a call or you can sell a put correct and what is the difference between these two we have already discussed in some other lecture right so you can buy a call or you can sell a put both are for bullish view in the same way you can be bearish by buying a put or selling a call correct so you can buy a put and sell a call you can be bearish now there is another view which you can take is that I don't know where the market is going I don't know where the market will go but I know it will go somewhere ऐसा व्यू भी ले सकते हैं ओके समझो कोई इवेंट है बजट है ये देखो जीएसटी काउंसिल का मीटिंग है एक दो स्टॉक पे आज इंपैक्ट दिखा भी राइट सो देयर विल बी टाइम be an event which is a macro level event okay and based on that the market can go any side जैसे बजट हो गया इलेक्शंस हो गए okay nobody knows what will be the outcome of that but we know because of that the market will go in some or the other direction so what do I do is I buy a call and I buy a put so when I buy a call and मार्केट ये पॉइंट से या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा so if it goes up okay my call is going to make a lot of profit my put is going to make only a limited loss to the premium paid right so net I'll make money if the market goes down my put is a lot of money. My call is going to lose only the premium paid
and therefore net I'm going to make some money. So this is another type of view that you can take, and for that the strategy can be simple: buy a call and buy a put of the same strike price. Right? Now this kind of a combination is called a strategy, and now we will give it a funny name to it. Right? We will give it a name. इसको हम बोलते हैं straddle. Okay, now complicated and glamorous. But है क्या? Basically क्या है? Call buy किया है, put buy किया है. That we were anyways going to do. Right? We know how to do. So this is another type of view where you say, I don't know where the market is going. I don't know the direction of the market, but I'm sure it will go somewhere. Okay. When you do that, then you can take that kind of a strategy for that view. There is a fourth basic view in which you can say, I don't know where the market is going. I don't know where it will go. It will go up, it will go down. I don't know. But I'm sure that it will not go above this band and below this band. Okay. So market यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, don't know. But I know कि इसके ऊपर तो नहीं जाएगा. And at the same time, I know कि इसके नीचे नहीं जाएगा. अब इसके बीच में कहीं पे भी रहे, I don't care. Okay. So this is the fourth view that you can take, and how to create that kind of a structure by selling and selling a put which is of a down strike. तो ऊपर का कॉल बेच दिया, नीचे का पुट बेच दिया, तो बेसिकली आपका ये स्ट्रेटेजी हो गया. इसको हम बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल. ये सब मैं आपको बाद में वापस सिखाऊंगा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव कि व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू. सो दिस इज हाउ combining some options we create strategies. Okay, so अभी हम इस पर क्या क्या कर सकते हैं, and we will see each strategy in its individuality. Okay, so before we move to that, you need to understand that there are two types of strategies. One is expiry based strategies. And the second is intra-expiry strategy. Intra-expiry strategy matlab, I want to buy today and sell it tomorrow. I want to buy today and sell it today itself. I want to buy today and I don't want to wait till the expiry. I want to square it off before that. And there are certain strategies in which you need to wait till the expiry, maybe not exactly 3. Obviously, you can get out before that also, but the ideal profit, the maximum profit that you should get, that you will get only on expiry. This is the two broad classification of expiry based and intra expiry strategies. अब ये क्यों ऐसा है? Let me explain that to you. So let's say this is the graph. Okay, now this is your expiry day. Okay, and this is your, let's say, 30 days left. Okay, we all know that when I had explained the impact of time on your option value, the time value, what we are doing here is we are assuming that the market does not move at all, which is a hypothetical situation, but I'm assuming that the market does not move at all. In that case, time is continuously moving every day, right? Time तो चलते ही रहेगा, तो टाइम ये जो प्रीमियम जो है वो इस तरह से कम कर देगा, right? So it will be very steep expiry, and it will be a little bit flattish when it is far away from expiry. ये तो हम सबको समझ में आता है. This is the impact of time on the time value. However, we also studied one more tool or one more factor which affects your option price. अब मार्केट भी है, मार्केट मूवमेंट भी लिखा था,
बट मार्केट को हमने कांस्टेंट कर दिया है, सो वी आर नॉट लुकिंग एट द मार्केट मूवमेंट. Okay, so we are just looking at time and volatility. Now what happens is this is a smooth curve. Okay, but the volatility changes every day, every minute, and therefore what happens is this is effectively the way the time value moves. Because volatility एक दिन उसको ऊपर लेके जाएगा, एक दिन उसको नीचे लेके जाएगा. Got it? So you don't know actually. This should be a line. This should be a smooth line, but it will not look like a smooth line. Now, if this is the way your time value moves, can you predict क्या होगा बीच में? Can you predict क्या होगा बीच में? It's very difficult to predict. So today, let's say, if you take a trade on this day, wait for 10 days. Okay. Now, after 10 days, you are hoping that there will be a fall in the time value, but the time value is over here. अब आप क्या करोगे? आप बोलोगे यार इतना दिन गया, मेरे को टाइम वैल्यू का डीके मिलना चाहिए. वेयर इज दैट? You start something on this day. Okay, you start something on this day, hoping के 2-3 दिन में कहाँ कुछ गिरने वाला है, and it goes over here. You will not know कि क्यों गिर रहा है इतना सारा. Why is the price falling so much? There are still so many days left till expiry. Why is it falling like this? So the time अपना काम करता है. टाइम ने तो उतना ही काम किया था, लेकिन वोलेटिलिटी उसको गिरा के इतना प्रीमियम कर दिया. So you don't know when the volatility will change your premium. Okay, and that is why when you want to take a trade on this day and you want to exit this day, you don't know really what will be the option price. But you can take a trade anytime on this day, and if you want to look at the expiry day, the premium is going to come to 0. You can start here, it will come to 0. So you can start here and still wait till the expiry, it will come to 0. So whatever path it takes, the time value on the last day will come to 0. We don't know what path it will take. And because of this, if you are interested in intra-expiry strategies, okay, I would advise you, please enroll for the advanced course that we are going to start after 2 weeks. Okay, because there we will learn a lot more tools to understand this behavior. But for a layman, for a simple person, retail person, you should understand that if you initiate a strategy based on the view, okay, initiate it today, wait till the expiry. Initiate on any day which you like, okay, any day where you are getting a perfect view, and wait till the expiry, your work will be done. Is this understood why this difference? For the retail traders, this is easy to explain. If you open any book, okay, if you open any book, even if you open the SEBI ka series 8, okay, NISM ke series 8, okay, they will tell you about strategies which are expiry based. It will be after 5 days. We can't say that, but we know for sure on the expiry day the time value will be 0. What will be left, if at all, would be the intrinsic value. तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगा, लेकिन उसके ऊपर टाइम वैल्यू कुछ भी नहीं बचेगा. Okay, that is why this kind of a strategy is very easy to explain and teach anybody. Okay, and this obviously is not as easy as it looks, and that is why it takes a lot
different types of tools, and still even after learning those tools it is no guarantee कि आपको ये सब आ जाएगा. अगर वो करने का ही है, if that is the requirement, अगर वो करने से सब कुछ आ जाता तो सब लोग वही करते ना. It is not a confirmed thing. Okay, in this market, don't assume that because you know this, you know this, you know this, you are going to make money. ऐसा नहीं होता. This market is for everybody. It is not a monopoly of some learned few people. Okay, so don't get carried away by the jargons and the complexity. Make it simple, and you will enjoy your trading. Okay, let's continue with the expiry based trading strategies first, and then we will look what else we can do in this. Okay. So let's do an exercise. Okay, एक mathematical numerical sum करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. Let's say that, and I'll take real prices only. Okay. So I'm assuming that the Nifty would be at somewhere around 19,450. Okay, I'll write the price in a minute. Okay, now let's say there are 4 people. Okay, so I have Elvis, okay, who is bullish, okay, who is bullish on the market, and therefore he bought a 19,450 call. Then I have Ayush, who was bearish, okay, who was bearish on the market, and therefore he bought a 19. I have Kaushik, who had a view कि market अभी बहुत ऊपर चला गया है, कहां जाएगा मुझे पता नहीं, but I'm sure it will not cross 19,550 on the upside. Okay, till tomorrow, which is the expiry day. And then I have Harsh, okay, who has a view कि अब 19,350 is a good support, इसके नीचे नहीं जाएगा. I don't know कहां जाएगा, but इसके नीचे नहीं जाएगा. Okay, so all these 4 have traded on their own. I'll just refresh it. Can you see this? थोड़ा और zoom करता हूं. Okay, so Elvis has bought this at 52. Ayush has bought the put at 45. 52 and 45 लिख लेते हैं.
Kaushik has sold a call of 19,550 at 15 rupees and her put of 19,350 at 15 rupees. ओके, तो दोनों ने 15 रुपीज में बेच दिया. ओके, लेकिन ये चारों काम तो मेरे लिए कर रहे हैं ना. They are working in my company. Okay, I have given them the leeway to do whatever they want to. Okay, मैंने उनको फंड्स दिए है, आपको जो ठीक लगे वो करो. ओके, तो ये चारों ने अपने हिसाब से व्यू लिया, बट इफेक्टिवली सबका मिला के क्या प्रॉफिट एंड लॉस होगा ये तो मेरा ही होगा ना. नाउ आई एज द रिस्क मैनेजर वांट टू अंडरस्टैंड कि मेरा क्या होगा इन केस टुमारो ऑन द एक्सपायरी डे द मार्केट गोज लेट्स से समवेयर. सो आई विल क्रिएट सिनेरियोज टू अंडरस्टैंड कि मार्केट कहां जा सकता है. ओके, सो then to start I will take a very extreme scenario कि अगर कल को मार्केट लेट्स से 19,800 चला जाता है तो क्या. ओके, अगर 19,800 चला गया तो क्या. तो एल्विस का क्या होगा. एल्विस ने 52 रुपीज दिया था टू बाय द कॉल, तो 52 तो गया अब. ओके, वो तो वापस नहीं आने वाला है. वापस क्या आएगा, द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इफ एट ऑल. करेक्ट. सो यहां से यहां तक का 350 रुपीज वापस आएगा उसको. सो दिस विल बी हिज प्रॉफिट. उसने 52 दिया था, 350 मिलेगा. करेक्ट. व्हाट विल हैपन टू आयुष. आयुष ने पुट बाय किया था 45 रुपीज में. ओके, पुट का मतलब कि प्राइस नीचे जाना चाहिए, तो ही विल हैव द राइट टू सेल इट एट 18,450. राइट, बट मार्केट तो ऊपर चला गया एंड देयरफॉर उसका जो 45 रुपीज उसने दिया था उसको वापस कुछ भी नहीं मिलेगा एंड देयरफॉर द एंटायर 45 रुपीज इज गॉन. इट इज अ लॉस फॉर हिम. ओके, ऑलराइट, इतना समझ में आया कि दिस विल बिकम जीरो. What will happen to Kaushik? Kaushik had received 15 rupees. Okay, तो पहले उसने जब कॉल सेल किया तो उसको 15 रुपीज मिल तो गया था, बट he had made a contract saying that 19,550 के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट तो गया. ओके, आई एम अज्यूमिंग के यहां पे गया, तो अगर गया तो कौशिक को लॉस कितना होगा. He will have to give back 250 rupees. Correct. What will happen to Harsh? Harsh had made a trade selling 19,350 का put. उसका मतलब कि इसकी नहीं जाएगा. गया नहीं गया ना. It did not go. So he will receive this 15 rupees and that will be his. Correct. So this is how your payoffs will look like. Now what will be my payoff. मेरा payoff कितना होगा. So next I will get ₹33. Please calculate it. आपको मिलेगा 33 रुपीज. 15 रुपया ही क्यों. बिकॉज ही हैज टू गिव नथिंग बैक.
सो उसका ट्रेड क्या था कि 19,350 के नीचे नहीं जाएगा. Okay, that was his view, and the market did not go. So market went up. So the premium that he has received will be, he does not have to give anything back. Okay, and therefore 15 rupees. Now please understand this. अगर आपको इसको either plus some number or it will be plus 0. बट वापस माइनस साइन नहीं आ सकता. यहां पे देख लो -45 था प्लस 0, बट वापस माइनस नहीं हो सकता बिकॉज once you have paid the premium, that means you have written a minus that premium, then you cannot have more loss than that. Okay, on the other hand, if you have sold an option, चाहे call हो या put हो, you receive the premium, correct? When you receive the premium, वापस और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा. Either there will be a -0 or there will be a minus some number, but एक्स्ट्रा वापस प्लस नहीं होगा. ओके, सो अगर एक बार माइनस हो गया तो या तो प्लस होगा या तो प्लस 0 होगा. एक बार प्लस हो गया तो या तो माइनस होगा या तो -0 होगा. ओके, सो व्हेन यू कैलकुलेट ऑल दीज 4 पोजीशंस टुगेदर, okay, I hope you have calculated it by now, my profit would be 33 rupees. You can check it. Am I right? कोई तो टोटल कर दो यार. Okay, sell put not getting. Okay, ठीक है, we'll understand that. हर्ष ने ये पुट को सेल किया है, छाया ने ये पुट को बाय किया है. बाकी ये सब छोड़ दो. ओके, फॉरगेट ऑल दीस थिंग्स. वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर वन थिंग. ओके, ओनली दिस वन थिंग. सो हर्ष ने ये पुट सेल किया है, तो बाय किसने किया है? छाया ने बाय किया है. राइट नाउ छाया ने बाय किया है 19,350 का पुट at 15 rupees, correct? But she has bought. Market went up. Okay, what is Chaya's contract? Chaya का contract था कि she will sell Nifty at 19,350 on the expiry day. When the market has gone up to 19,800, is Chaya going to exercise her right? आप अपना राइट को एक्सरसाइज करोगे कि नहीं, मेरे को तो 19,350 में ही बेचना है जब मार्केट 19,800 है? ऑब्वियसली आप एक्सरसाइज नहीं करोगे ना. नहीं करोगे तो क्या होगा? आपने जो 15 रुपए दिया था आप बोलोगे हर्ष रख, नहीं चाहिए. राइट, बट आई डोंट वांट टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल निफ्टी टू यू एट 19,350. तो हर्ष बोलेगा ठीक है. तो हर्ष के पास 15 रुपए रह गया ना, उसका प्रॉफिट हो गया ना वो. करेक्ट. सो द सेलर ऑफ द ऑप्शन does not have the choice, but the buyer of the option has the choice and he or she does not want to exercise it. इसीलिए जो भी प्रीमियम मिला है वो हर्ष का हो गया एंड देयरफॉर उसके पास 15 रुपया बच गया. ओके, कूल. लेट्स क्रिएट अनदर सिनेरियो. ओके, ये तो 19,800 गया तो मुझे 33 रुपीज मिलेगा. बट अगर 19,500 लेट्स से 19,600 हो गया तो क्या होगा? 19,600 हो गया तो क्या होगा? अगेन वी विल लुक एट एल्विस's पोजीशन. उसने 52 तो दे दिया था. नाउ ही विल गेट बैक हाउ मच? द डिफरेंस बिटवीन 450 एंड 600 व्हिच विल बी 150. आयुष ने 45 रुपीज दे दिया था. He will not get back anything. Correct. कौशिक ने
₹15 ले लिया था, होपिंग के इसके ऊपर नहीं जाएगा, बट गया। कितने से गया? ₹50 से गया, तो ₹50 देना पड़ेगा। हर्ष को ये ₹15 मिल गया। He will not have to give anything. When you total this, what Chirag will get is plus 33. Let's try another number. अगर 19,550 ही रह जाता है, बहुत दूर नहीं जाता है, 19,550 ही रह जाता है, तो क्या होगा? Elvis के he has already given 52. What will he get back? The difference between this and this, which is plus 100. Right? आयुष के पोजीशन में क्या होगा? He has bought a put of 450. मार्केट अभी भी 550 है, तो this is minus 45 and he will not get back anything. कौशिक ने ₹15 ले लिया था, saying that इसके ऊपर नहीं जाएगा, नहीं गया ना, तो he has to give nothing back. हर्ष के पोजीशन में again he will get his 15 and he will not have to give back anything, right? And therefore net what Chirag will get is still 33. Okay, let's take another example के और कहां पे रहेगा तो क्या होगा? So 19,450 पे ही रहेगा, जहां पे आज है वहीं पे रह गया। अगर यहीं का यहीं रह गया तो क्या होगा? एल्विस का 52 जाएगा, बट ही विल नॉट गेट बैक एनीथिंग बिकॉज ये जो है वो तो 450 का है एंड मार्केट 450 ही रह गया, सो ही विल नॉट गेट बैक एनीथिंग, जीरो। सो 52 इज गॉन। आयुष का 45 इज गॉन बिकॉज और कुछ मिलेगा नहीं, इसके नीचे जाएगा तो मिलेगा, अभी तक कुछ नहीं मिलेगा। कौशिक ने बोला था कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, नहीं गया एंड देयरफॉर उसको ₹15 मिल जाएगा, he has to give nothing back. एंड हर्ष का भी सेम पोजीशन, ₹15 मिल गया, he has to give nothing back. Correct? Now if you total this, Chirag will have a loss of 67. Correct? So अगर यहीं का यहीं रह गया तो just 67 माइनस हो जाएगा. So Saurav, please add this, no? So minus 52 plus 100 minus 45 plus 0 plus 15 minus 0 plus 15 minus 0, you will get 33. ये चारों को ऐड कर दो ना, you will get 33. In this case, minus 52 plus 0 minus 40 plus 0 plus 15 minus 0 plus 15 minus 0, you will get minus 67. Please check it. Use a calculator and check it. तो यहाँ पे तो माइनस होगा, लेकिन अब हम देखेंगे कि इधर से नीचे जाएगा तो क्या होगा. सो लेट्स कंसिडर दिस केस, अगर नीचे गया तो क्या होगा. सो 19,350 हो गया तो क्या होगा. ओके, इन दैट केस एल्विस ने जो 52 दिया था, he had bought a call but market went down, so he will get nothing and entire 52 is gone. आयुष ने 45 दिया था और बोला था कि 450 के नीचे जाएगा उतना वापस मेरे को मिलना चाहिए. दैट मींस 100 रुपीज नीचे गया तो ही विल गेट बैक 100 रुपीज.
करेक्ट। कौशिक ने बोला था कि 550 के ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए 15 रुपया उसने ले लिया था, नहीं गया तो उसको वो पूरा मिल गया, he does not have to give anything back. हर्ष had said कि 350 के नीचे नहीं जाएगा and he had received 15 rupees. मार्केट 350 ही है, so he does not have to give anything back. In this case, Chirag will get 33 again. What if the market goes to 19,200? एल्विस का पोजीशन में -52 +0, आयुष की पोजीशन में -45 but plus the difference which will be 250 points. ओके, कौशिक को 15 रुपया मिल जाएगा, he has to give nothing back. but हर्ष को जो 15 रुपया मिला था, he has to give back the difference which will be 150. and therefore net चिराग का जो पोजीशन होगा would still be +33. okay, so if you look at how this structure is being formed, कहीं पे भी ऊपर निकल गया तो आई एम गेटिंग, कहीं पे भी नीचे निकल गया तो आई एम गेटिंग 33. ओनली एंड ओनली इफ इट रिमेन्स एट 19,450 जहां पे अब भी मार्केट है, इफ इट रिमेन्स देयर देन आई विल हैव अ लॉस ऑफ 67. ओके, दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड पे ऑफ, ओके, इज कॉल्ड अ स्ट्रेटेजी. आपको अभी से पता है कि मार्केट अगर नीचे गया तो भी मुझे 33 मिलेगा, अगर ऊपर चला गया तो भी 33 मिलेगा, ऊपर कितना भी ऊपर चला गया मुझे 33 ही मिलने वाला है, ज्यादा भी नहीं मिलेगा. मार्केट कितना भी नीचे गया आई विल स्टिल गेट 33 ओनली. बट इफ इट रिमेन्स हियर where I started, I will lose 67. Correct? And then what will be your break even point? Your break even point would be a 450 के ऊपर 67 points, which will be 19,517. Okay, that will be your break even point. And downside pay, it will be 19,383. Okay, इसके बाहर कहीं पे भी रह गया ना, you will start getting some profit. So yes, it will change ना, because market ने नीचे गया तो क्या फर्क. So we are talking only about this position. break even मतलब मेरा 0 profit 0 loss होगा, that is called break even point. There will be no profit no loss. Okay, so Chaya, I am looking at this price. ये पे ऑफ क्या है? इंडिविजुअल कॉल बाय कमाएगा कि पुट कमाएगा, आई डोंट केयर, बिकॉज दैट इज अ स्ट्रेटेजी दैट आई हैव क्रिएटेड. राइट, मैंने 4 लेग्स कर लिए हैं, ये चारों पोजीशंस ले लिया है. ओके, जब चारों पोजीशन अगर मैंने ले लिया है तो इसके बीच में कोई भी कमाए कोई भी लॉस करे, आई डोंट केयर. ओके, सो ये पॉइंट is the maximum loss. इसके ऊपर 67 points will make it 0. इसके नीचे 67 points will make it 0. Okay, fine. So this is called a strategy. अगर इसको ये पे ऑफ को मैं अगर एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करूं तो कैसा दिखता है? I'll just show you कि अगर मैंने वो पेपर पे प्लॉट किया कि this is your number line, okay, and this is your profit and this is your loss, and if you are at 19,450
ओके, तो आपको क्या होएगा, अगर मार्केट इधर का इधर रहेगा तो योर लॉस इज 67 रुपीज, करेक्ट। एट 19,550 आपको कितना मिल रहा था, 33 रुपीज प्रॉफिट था, राइट। सो आपको यहाँ पे 33 रुपीज प्रॉफिट है। एट 19,650 आपको 33 रुपीज प्रॉफिट है, राइट। अगर नीचे गया तो 19,350 पे आपको 33 रुपीज प्रॉफिट है, सॉरी। 19,250 गया तो, या 19,200 गया तो 33 रुपीज प्रॉफिट है, राइट। सो इफ आई जस्ट ज्वाइन एंड शो इट टू यू कि ये किस तरह से दिखेगा, राइट, ऐसा ही दिखेगा ना। सो अगर यहां का यहां रह गया तो इतना लॉस। इफ आई वांट अ जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, ओके, तो ये हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट। इफ द मार्केट रिमेन्स एट 19,517 तो मुझे जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस होगा। उसके बाहर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होना चालू होएगा टिल 33 पॉइंट, उसके बाद माय प्रॉफिट विल बी स्टैग्नेंट। ऑन द डाउन साइड दिस विल बी माय ब्रेक इवन पॉइंट व्हिच विल बी 19,383, ओके। इसके नीचे जाएगा तो आई विल स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट्स टिल 33 रुपीज, उसके बाद वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, ओके। सो दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, नाउ कैन यू सी दैट दिस लुक्स लाइक अ बर्ड शेप, बर्ड शेप जैसा दिख रहा है कि ये उसका बॉडी है, ये इसके विंग्स है, ऐसा दिख रहा है ना। सो व्हाट वी कॉल इट इज, इसको ये शेप को देख के हमने ये स्ट्रैटेजी मतलब ये को हमने नाम दिया है आयन, ओके। अभी ये नाम तो है ना जो फनी नेम्स है, ओके। हम इसको आयन कॉन्डोर बोल दो, देयर विल बी सम बटरफ्लाइज, देयर विल बी स्प्रेड्स एंड कैलेंडर स्प्रेड्स एंड यू नो देयर विल बी फनी नेम्स, लेकिन नाम को इंपॉर्टेंस नहीं देना है। इंपॉर्टेंस किसको देना है, ये कॉम्बिनेशन को। विच आर द ट्रेड्स दैट आई हैव डन, I have bought a call, I have bought a put. I have sold a call of a higher strike price, I have sold a put of a lower strike price. When I make this 4 ka combination, then I call it an iron condor. Is this understood, everybody? If yes, just give me a thumbs up. Now, एक ही स्ट्रेटेजी के अंदर हमने 9 स्ट्रेटेजीज सीख लिया है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। सो इंडिविजुअल अगर आप इसको देखोगे, सिर्फ एल्विस का पोजीशन देखोगे, ओके, तो वो आपको बाय कॉल का पे ऑफ मिल जाएगा। लुक एट दिस, ये बाय कॉल का है कि 52 तो आपने दे दिया आज, अगर ऊपर जाएगा तो जितना ऊपर जाएगा मिलेगा, नीचे जाएगा तो 52, बाद में कितना भी नीचे जाएगा 52 से ज्यादा लॉस नहीं होगा। सो दिस इज द पे ऑफ अ बाय कॉल। सो आपने खाली इसको ही आइसोलेशन में देखा तो आपको पता चलेगा कि दिस इज द पे ऑफ अ बाय कॉल, राइट। सो आपको एक स्ट्रेटेजी का पे ऑफ मिल गया ये, ओके। ये हो गया आपका बाय पुट का स्ट्रेटेजी, राइट। सो बाय पुट में क्या होगा कि अगर ऊपर निकल गया तो आपका 45 रुपीज लॉस हो जाएगा, अगर मार्केट नीचे गया तो जितना नीचे जाएगा उतना आपको मिलेगा, राइट। सो दिस इज द पे ऑफ अ बाय पुट। सो दिस इज योर सेकंड स्ट्रेटेजी। लुक एट कौशिक्स पोजीशन, उसने कॉल सेल किया है तो कहीं पे भी मार्केट जाए उसको 15 रुपए तो मिल गया था,
लेकिन अगर ऊपर गया तो he will have to return some money, he will have to give back. Okay, जितना ऊपर जाएगा उतना देना पड़ेगा. Therefore, this is the sell call. Right? हर्ष का पोजीशन देख लो, he has sold a put. अगर मार्केट ऊपर जाता है तो he will get this 15 rupees, but अगर मार्केट नीचे चला गया तो he will have to pay. जितना नीचे जाएगा उतना he will have to pay. This is a strategy for a sell put. Right? Right? आपने चार इंडिविजुअली समझ लिया क्या क्या होता है. Now, if I combine these two options, इसको आप भूल जाओ, इसको मत देखो. ओके, ये दोनों को मत देखो. जस्ट लुक एट दीज टू. आपने क्या किया है? बाय कॉल ऑफ 450, बाय कॉल ऑफ 19450 एंड बाय पुट ऑफ 19450. ओके, this becomes a long straddle. अभी मैंने बात किया कि बाय अ कॉल एंड बाय अ पुट. देखो मार्केट अगर ऊपर निकल गया तो कॉल हैज मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, द पुट हैज मेड लॉस ओनली टिल द प्रीमियम. Right? So net you will make some money. But if it remains here, so this will also become zero and this will also become zero. So you will lose both premiums. अगर वो नीचे निकल गया तो this will lose, but this will gain a lot of money. So net will make money. This is called a long straddle. Okay? Yes. So इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे. I'll just write it down. So this is long straddle. Okay, so this is your fifth strategy. Right? Now, if you do only these two, इसको भूल जाओ, खाली ये दो करते हो तुम. So what is it? It is sell a call of a higher strike price, sell a put नीचे नहीं जाएगा, उसके बीच में कहीं पे भी रहेगा, you will get 15 and 15 30 rupees. देख लो. So अगर ऊपर निकल गया तो ये कॉल लॉस करेगा, बट अगर इधर का इधर रह गया तो यहाँ पे दोनों प्रॉफिट करेगा. इसके बाहर निकल जाएगा तो या तो ये लॉस करेगा. ओके, सो इट इज कॉल्ड अ शॉर्ट स्ट्रैंगल, नॉट शॉर्ट एंगल, शॉर्ट स्ट्रैंगल. ओके, शॉर्ट इसके लिए क्योंकि हम ऑप्शन देख रहे हैं. शॉर्ट स्ट्रैंगल. Okay, this is your sixth strategy. Now, pay attention to this. If I make a combination of this and this, मैंने 450 का कॉल बाय किया और 550 का कॉल सेल कर दिया. तो अगर ऊपर जाएगा, ओके, तो ये जितना ऊपर जाएगा, अगर ये 350 ऊपर गया तो ये 250 लॉस कर देगा. ये 150 कमा रहा है तो ये 50 लॉस कर देगा. तो बेसिकली मेरे पास 100 रुपीज रहेगा, इसका और इसका डिफरेंस 450 और 550 का डिफरेंस 100 रुपीज वापिस आएगा. But I had already given 52 to buy this and I had received 15 from selling this. Okay, so मैंने जो नेट अपने जेब से दिया था वो 52 दिया था, लेकिन 15 तो ले लिया था. So I had given only 37 rupees as a premium outflow. Okay, so this combination, this kind of a combination is called a bull call spread. So this combination is called a bull
call spread. This becomes your seventh strategy. If you combine this and you combine this, if you combine these two, तो एक में 45 दिया है, एक में 15 रुपया ले लिया है. ओके, दैट इज ओनली 30 रुपीज इज द आउटफ्लो. अब नीचे गया तो ये 250 कमाएगा तो ये 150 लॉस कर देगा, ये 100 कमाएगा तो ये 0 करेगा. सो आपके पास नेट 100 ही रहने वाला है. सो 30 आपने दिया था, 100 आपके पास आया, सो यू विल गेट 70 रुपीज ओनली. ओके, सो या तो 30 लॉस होगा या 70 प्रॉफिट होगा. सो दिस इज कॉल्ड अ बेयर पुट स्प्रेड. So this becomes your eighth strategy. And चारों को कंबाइन करके करोगे तो मैंने क्या बोला इसको, आयन कॉन्डोर, राइट? When you combine all the four, iron condor, and that becomes your ninth strategy. समझ में आ रहा है? सो ये जो स्ट्रेटेजीज है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स या कुछ पता नहीं है आप माइंड में क्या था, बट इट इज नथिंग बट सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस. और चार ही चीज हो सकता है, बाय कॉल, बाय पुट, सेल कॉल, सेल पुट, और कुछ हो ही नहीं सकता, राइट? द आर्ट इज कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेल करना है. ओके, अब ये स्ट्रेटेजी को नाम क्यों देते हैं हम? व्हाई डू वी गिव इट सो सच नेम्स? बिकॉज इट इज जस्ट अ लैंग्वेज. ओके, इट इज ओनली फॉर कम्युनिकेशन. कि अगर मैंने आपको बोला कि मैंने बुल कॉल स्प्रेड किया है तो आपके माइंड में वो तुरंत क्लिक हो जाएगा कि यू हैव बॉट अ कॉल एंड यू हैव सोल्ड अ कॉल ऑफ अ हायर स्ट्राइक. अगर मैंने बोला कि आई हैव बॉट अ स्ट्रैडल तो आपको पता है कि मैंने कॉल बाय किया है और पुट बाय किया है ऑफ द सेम स्ट्राइक. इफ यू थिंक कि मैंने शॉर्ट स्ट्रैंगल किया है तो यू नो मैंने ऊपर का कॉल बेचा है, नीचे का पुट बेचा है. दैट इज मीनिंग ऑफ शॉर्ट स्ट्रैंगल. So it is just a language to communicate with each other. Just because you make short strangle, तो आप ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बन जाते हो. Just because you have made a short strangle, तो आपको ज्यादा पैसा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, आपको सिंपल कॉल बाय करके भी पैसा कमा सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम? So just because you make it complicated, it does not make you intelligent. And just because you have made it complicated, ऐसा नहीं है कि आपको पैसा मिलेगा. It does not guarantee you profits. Okay? कभी कभी ऐसा बना देते हैं कि कहीं पे भी जाए मार्केट में आपको लॉस ही होगा, वैसा भी बना देते लोग. ओके, सो दिस इज व्हाट इज स्ट्रेटजीज. अब इसी को हम कैसे थोड़ा ट्विस्ट करके और एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं. सो मैंने क्या बताया था अभी आपको कि बाय 19,450 का कॉल. ओके, आई ऑल्सो डिड अ ट्रेड ऑफ बाय 19,450 का पुट. I traded sell 19,550 का call and I also traded sell 19,350 का put.
Okay, this we called it iron condor. Okay, अब yesterday मैंने आपको सिंथेटिक समझाया था. Okay, buy call is what? Buy future and buy put. तो क्या can I write it like this? Buy future and buy 19450 का पुट. इसका मतलब सेम ही होएगा ना. यहां पे तो मैं एक्चुअली में बाय 19450 का पुट ही कर रहा हूं. तो ये दो क्वांटिटी हो जाएगा बिकॉज दीज आर सेम. ओके, नाउ सेल कॉल भी मैं इसी तरह से सिंथेटिक में लिख सकता हूं, वेयर सेल कॉल इज व्हाट? सेल फ्यूचर एंड सेल पुट. तो सेल फ्यूचर एंड सेल 19550 का पुट. Okay, and this is again I'll write it as it is, sell 19350 का पुट. Okay, so if I look at it, अगर मैं इसको सबको वापस लिख दूं कि ये जो कॉल, ये फ्यूचर है बाय और ये सेल फ्यूचर, तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा ना. मैं इधर फ्यूचर बाय करूंगा फिर इधर फ्यूचर सेल कर दूंगा, तो रहेगा क्या? दोनों जीरो हो जाएगा. बट मेरे पास रहेगा क्या? आई विल हैव दिस, so I will have a sell 19550 का put, maybe let's say 50 quantities. Okay, I will have buy two options, so I have buy 19450 का put but multiplied by 2, so plus 100 quantity. Okay, and ये यहाँ पे लिख लेते हैं. तो sell 19350 का put minus 50 quantity. Now अगर मैंने इस तरीके का कॉम्बिनेशन किया, if I do this kind of a combination, we call it a butterfly. Okay, अब ये कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई. But this is exactly like this. ये सिर्फ इसका सिंथेटिक्स यूज किया है बस. ओके, तो इसमें there is no change between this and this, and hence even if you make a butterfly by only the puts, trading only puts, okay, आपको जो इफेक्ट मिलने वाला है वो यही मिलने वाला है. It will be exactly the same like this only. Now somebody calls it a bird, somebody calls it a butterfly. Condor is a bird. Okay, condor एक बर्ड का नाम है. Okay, so कुछ लोगों को ये बर्ड दिखता है, कुछ लोगों को ये बटरफ्लाई दिखता है. It is the same thing. उसका पे ऑफ विल बी एग्जैक्टली सिमिलर, उसका ट्रेड्स अलग होगा बस. इसमें हमें चार लॉट्स ट्रेड करने हैं. तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 4 लॉट ट्रेड करने. लेकिन यहाँ पे आपको एक इधर, 2 इधर और एक इधर ऐसे ट्रेड करना. तो 4 ट्रेड तो करना ही है, राइट? सो दिस इज अ बटरफ्लाई and this is a condor. So Sparsh, if you are looking at all these things for the first time, obviously these things are going to be confusing. Okay, however, you should get a habit of this. And how do you get a habit? When you practice all these things. Okay, अगर आप practice करोगे
तो आपको फट से समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, right? So you have just started this course. Obviously, it will take time for you to practice and understand it and have a grip on these things, right? Good. So that is why we have given you the recording also, so you can replay the entire session whenever you have free time. Okay? Maybe ऐसा भी हो सकता है कि you have something in mind today and you are not sitting with a, you have some other agenda pending, and here you can concentrate. So when we are doing all these things, it looks confusing because आपका पूरा attention नहीं है. Don't worry, आपके पास recording है. Whenever you are clear, okay, in your mind and you are free, you can see this. So buy future and sell future मैंने कल ही आपको समझाया था when I was trading the synthetics. Okay, so just refer to yesterday's session. Buy future, sell future मतलब there is a contract of futures जो हम buy और sell कर सकते हैं, right? So मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि if this is the current market price, इसका futures भी trade होता है. So the future is being traded at 19505. Okay, so इसको अब buy करना है तो buy करो, sell करना है तो sell करो. Futures and options are different. Yes, of course they are different. So I think you will have to initiate with the first session. आपका maybe first session आपने miss कर दिया. So each and every contract क्या बोलता है? We have explained it in depth. Okay, so conceptual understanding से ही start किया था. So I would recommend कि आप आज पहले first session को replay देख लो, so that आपका ये confusion दूर हो जाए. So for all the others, you have learned 10 strategies right now. Okay, आपने buy call का individual strategy देगा, buy put का देगा, sell call का देगा, sell put का देगा, bull call spread देगा, bear put spread देगा, long straddle, long strangle, iron condor and butterfly. सब देख लिया एक साथ में. Okay? अब इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है. Now इससे complex करना है तो आप कर सकते हो. What you can do is now this is a tricky question. Huh? Now pay attention to this. This is a tricky question. तो ध्यान देके सुनना. If I buy 19450 का call, and the price, let's say, I'll take the live prices. 19450 का call is, I'll have to refresh this. Okay, so 19450 से ऊपर आ गया तो I'll take 19500 का call. Okay. I'm buying a 19500 का call at 31 rupees. Okay. ₹31 में मैंने 19500 का कॉल बाय किया. क्वांटिटी आई बॉट 50 शेयर्स. एंड अगेंस्ट दैट आई सोल्ड 550 का कॉल at 16 rupees. However, the quantity that I sold is 100 quantity.
So I bought 50 of a lower strike price and I sold 100 of a higher strike price. Okay. Now, if it goes down today itself, stop asking questions abhi ke liye, please focus on this. I will answer your questions later on. अभी के लिए फोकस करो कि if you have bought one and sold two and the market goes down today itself, you will make some money. But if on the expiry day, if it goes down, this will also become zero and this will also become zero. So basically, you are giving away 1600, getting 1600 rupees and giving 1600 rupees. तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है. If it goes down today itself, not tomorrow, if it goes down today itself, you will still make money on it. Because दो कॉल आपने बेचा है and एक ही कॉल बाय किया है. So you will still make money if the market goes down. However, on the expiry day, if the market goes up, okay, till 19,550, this is going to make 50 rupees. This will become zero. So आप ऊपर जाएगा तो profit होगा. Now this is called a ratio spread because आपने this multiplied by this and this multiplied by this जो दिया है, okay, it is the same. So whatever premium you give, you take it back by selling more quantity. That we call as a ratio spread. Ratio spreads become complicated because इंट्रा एक्सपायरी पीरियड पे व्यू ये है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, बट एक्सपायरी बेस्ड अगर आप देखोगे तो आपका व्यू है कि ऊपर जाना चाहिए. इसीलिए मैंने ये क्लासिफिकेशन पहले दिया था. एक्सपायरी बेस्ड and intra expiry. So if you look at the ratio spread intra expiry, your view is bearish. But if you keep it till expiry, your view becomes bullish. इसीलिए ये सब strategies जब करते हो तो complexity बढ़ जाता है. And if you want to avoid such things, it's okay. You can simply avoid these kind of complexities. If you don't understand what is the view, how to take a view properly, then don't get into such strategies. देखो मैंने ये आपको बताया because अगर आपने बुक खोल के पढ़ना चालू किया, okay, तो उसमें ये strategies होगा. This will be there. But practically problem क्या है that the book will not tell you. Right? So मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज भी है, बट आपको करने का जरूरी नहीं है. यू कैन स्टिक टू सम बेसिक स्ट्रेटजीज एंड स्टार्ट मेकिंग मनी. ओके, सो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल जो चाहिए, जितना चाहिए उतना मिलेगा. जितना कॉम्प्लेक्सिटी करना है कर सकते हो. एज आई मे हैव टोल्ड यू, I have done my PhD on this subject. Okay, अभी 5 साल निकाला है तो खाली बुलगॉल स्प्रेड्स एंड स्ट्रैडल स्ट्रैंगल समझने के लिए थोड़ी 5 साल निकाला है. ओके, बट ये सब समझ के, सब कुछ समझ के, I have come to the conclusion that keep it simple and you will make money. You make it more and more and more complex, you are just creating ways to lose money. Because it is not about the complexity of this combination. It is not about the complexity of this combination that is a problem. The real problem is your psychology. It is
You who cannot wait till the strategy really performs. Okay? ये एक ट्रेडिंग मेंटालिटी का प्रॉब्लम है, नॉट अबाउट द साइकिल द एक्चुअल द स्ट्रैटेजी. ये करके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि जिसमें प्रॉफिट हो रहा है, अरे मार्केट नीचे गया, चलना इसको बाय कर लेते हैं, इसमें प्रॉफिट हो रहा है ना, इसमें लॉस रहने देते, देन इट गोज फर्दर डाउन. सो ये सब जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, the trading mentality, the greed, the fear that comes in, that is the problem. So when is ratio spread to be squared off? It is based on your view, I said. If you wait till the expiry, your view is bullish. So if you are bullish in view and you have done this, you have to wait till expiry. If you are bearish and if the market goes up, okay, तो आपको लॉस ही होगा. But if you are bearish and you do this, and if the market goes down, you will make it. Okay? So इसमें आपको टाइम भी साथ में कंसिडर करना पड़ेगा कि till when do you expect your view to materialize? Market does not go to a strike, particular strike. How to find it? How to find what? कहां तक जाएगा, किधर जाएगा? अगर ये मुझे पता होता तो सब लोग वही नहीं करते. मैं इधर होता आपके सामने, मैं भी कोई रमेश दवानी की तरह या राधा किशन दवानी की तरह कहीं पे करोड़ों के बंगलों में नहीं बैठा होता. हाउ कैन एनीबडी नो कि मार्केट कहां तक जाएगा, किधर तक जाएगा? वी कैन नॉट. इसीलिए तो हम ये स्ट्रेटजीज करते हैं ना. Yesterday only I told you, if you are very sure of what is going to happen, simply buy the future, right? But we are trading options because we are not very sure. We want to have an inherent stop loss somewhere. कि कुछ अगर गलता हो गया तो I should not lose everything. That is why I am trading in options. Okay, so it is not only the leverage that I want, but I also want the inherent stop loss that options give me and the inherent risk management that the options trading gives me. Okay, so ये सब सुन के, ये सब सुनने में तो अच्छा लगा होगा कि हाँ नया सीखा, बट कल से करना क्या है? Isn't that the question? कि क्या मुझे भी पीएचडी करना पड़ेगा सब करने के लिए बिफोर आई स्टार्ट? आंसर इज नो. एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, उसको आप फॉलो करोगे तो आपको अच्छे से रिटर्न्स मिलेंगे. डू यू वांट टू लर्न दैट? If yes, just give me a thumbs up, otherwise we can continue with these complexities. Yeah. So Chaya, your answer is yes, and others, thank you. So let's start with a basic strategy. देखो, एकदम बेसिक सिखा रहा हूं बिकॉज इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट. ओके, इसीलिए मैं इसको इस तरह से सिखा रहा हूं. सो आई विल टेक लाइव प्राइसेस ओनली. सो बाय 19500 call and I will take the 13th July, sorry, what do you say, the 20th July expiry, yeah, क्योंकि 13th तो कल ही expire हो जाएगा. So I will take the next expiry, 20th July. Okay. Can you read this? Okay. So buy 19500 call. Now this I am doing because I have a view which is bullish. The premium that I will be giving is 93 rupees.
नाउ कल ही मैंने आपको हेजिंग सिखाया था। हेजिंग का मतलब क्या है कि मेरा जो ओरिजिनल व्यू है उसको मैं टच नहीं करूंगा। सो दिस इज माय व्यू बुलिश एंड देयरफॉर आई बॉट अ 19500 कॉल। ये तो मेरा ओरिजिनल व्यू है, आई एम नॉट गोइंग टू टच दिस। I want to hedge this because I think ये 93 rupees is a very high premium to give. I want to hedge this. Now I can hedge it with two things. मतलब bullish view है तो उसको offset करने के लिए bearish view लेना पड़ेगा. Now bearish view I can take by two ways. I can buy a 19500 का put, okay, to make it bearish. But if I make a 19500 का put, so this will become a straddle. तो स्ट्रैडल तो कब करते हैं जब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जाएगा। ऐसा तो व्यू नहीं है मेरा, मेरा तो व्यू है कि ऊपर ही जाएगा। तो मैं क्यों नीचे जाने का व्यू लू और वो भी वाइल्ड मूवमेंट का व्यू लू। आई डोंट नो कि वाइल्ड मूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा। आई जस्ट नो कि वो ऊपर जाएगा, दैट इज व्हाट आई नो। कितना ऊपर किधर तक वो सब मुझे नहीं मालूम। सो आई वुड रादर प्रेफर टू सेल और 19600 कॉल एट द रेट ऑफ, मेरे ख्याल से 53 रुपीज कुछ था प्रीमियम, 53 रुपीज। व्हाट हैव आई डन? दिस इज अ सिंपल बुल कॉल स्प्रेड, अभी सिखाया था। कॉल बाय करो, ऊपर का कॉल सेल कर दो, दिस इज अ बुल कॉल स्प्रेड। अभी इसमें हेजिंग क्या किया मैंने, 93 दे दिया है लेकिन 53 वापस ले लिया। On this contract what I have said, I have a view कि मार्केट 19500 के ऊपर जाएगा। बट यहां पे हमने क्या बोला कि 19600 के ऊपर नहीं जाएगा। 19600 के ऊपर नहीं जाएगा। अगर गया तो इसमें लॉस होगा लेकिन इसमें तो प्रॉफिट होता होगा ना। बट फॉर दैट I have got 53 rupees back. So what is the net outflow? 40 rupees. In this we have maintained a 100 point movement, 100 point का gap. Okay, कितने points का करना we can see that later. अभी के लिए इतना देखो कि we have created a 100 point gap and आपको 40 rupees का outflow हुआ. Now if the market goes up as your view was, if it goes to 19800, तो इसमें आपको 300 वापस मिलेगा, इसमें 200 देना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको तो 100 रुपीज ही मिलने वाला है। सो द इनफ्लो इफ यू आर राइट, ओके, विल बी ओनली 100, देयरफॉर योर प्रॉफिट विल बी ओनली 60. So either there will be a loss of 40 if your view is wrong, and if the market goes down, this will also become zero and this will also become zero. But if your view is right and the market goes up, इसके ऊपर कहीं पे भी जाए, 19600 के ऊपर कहीं पे भी जाए, you are going to get 60 rupees only, so max profit. So this is the net premium that you have given, and therefore 19540 becomes your break even point. अगर 19540 आके रुक गया तो ये कॉल में आपको 40 रुपीज वापस मिलेगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन जीरो हो जाएगा। तो 40 आपने दिया था, वो 40 रुपीज मिल गया, सो दैट बिकम्स योर ब्रेक इवन। So from this point you need to be right only 40 points to not make a loss. उसके ऊपर कितना भी जाने दो, okay, you will get something. Okay, now इसके अंदर ये तो कोई भी बुक बता देगा आपको, this is not what I want to show you. ये तो कोई भी बता देगा. Let's make a bearish view also. So if I have a bearish view,
then what do? I buy I can buy a 19450 put, and I can sell a 19350 put at 53. So आपने 89 दिया, 53 ले लिया, so net आपके जेब से 36 rupees गया. Okay, if the market goes up and your view is wrong, you will lose this 36 rupees. But if your view is right and the market goes down, this will earn first, this will lose then. तो ये difference जो है वो 100 rupees है. So 100 rupees आपको वापस मिलेगा. That means net आपको 64 rupees का profit हो सकता है. Okay? या तो आपको 36 का लॉस होगा या 64 का प्रॉफिट होगा. बस इसका भी ब्रेक इवन पॉइंट would be somewhere around 19,414, right? So 36 पॉइंट्स आपको राइट जाना. ओके, इसके बाद आपका प्रॉफिट चालू हो जाएगा. करेक्ट. नाउ अब मेन स्टोरी शुरू होता है. पे अटेंशन नाउ. एवरी वीक you can take a view. Either it will be bullish or it will be bearish. Okay, I'll teach you some indicators जिसके बेस पे आप व्यू ले सकते हो कि bullish बनना है कि bearish बनना है. Okay, now if you are a good trader, if you know how to take good views, तो जब जब आप right जाओगे so you will get almost 60. So I'm just averaging brokerage, tax, सब मिला के I'm just averaging it to 60 rupees profit and 40 rupees loss. Okay, I'm just averaging it to 60 rupees profit and 40 rupees loss. तो अभी जो 64 मिल रहा था, 63, वो सब छोड़ो, वो सब brokerage tax अंदर आ गया. So 60 rupees या तो profit होगा, 40 rupees loss होगा. So if you are right, multiplied by 50 shares because this is one lot. Okay, if you are right, you will get 60 rupees profit. Correct? And therefore, आपका जो net profit होगा, वो होगा plus 3,000. But if you are wrong, तो आपका loss होगा minus 2,000. Correct? Now, when you buy a call and sell a call, when you are trading a spread, there is some margin that is required because मैंने कल ही बताया था sell option पे margin लगता है. So the margin required is almost 22,000, but I am taking 25,000 on a conservative side. Earlier, maybe 1-2 साल पहले, this was 40,000. Okay, तो अभी के टाइम में it is somewhere around 25,000 rupees for lot of trade. Okay, now this is for a bull spread or a bear put spread. So it is not that high. You can check it. It is somewhere around 25,000 only. Okay, but we will keep enough money, so don't worry about that. So 25,000 में अगर आपको bull call spread करना है या फिर bear put spread, if you want to do both of them, if you want to do a bull call spread and a bear put spread, मतलब आपको condor बनाना है, then it may be 38,000. Okay, but यहाँ पे
If you just make a bull call spread or a bear put spread, the margin requirement is around 25,000 per lot. Now, एक साल में how many weeks are there? How many weeks are there in 1 year? 52 weeks. If you are a good trader, you will have at least 70% success ratio. Okay, 70% success ratio matlab 35 weeks you will be right out of 52 weeks, and let's say 17 weeks you will be wrong. ठीक है? Whenever you are right, you get 3,000 into 35 weeks. You get 1,05,000 as profit. You get loss of 34,000. Net, you get 71,000 on a profit investment of 25,000. और क्या चाहिए? 71,000 rupees profit on 25,000 rupees in 52 weeks. करना क्या है? वीक में व्यू लो और ट्रेड करो, या तो बुल कॉल स्प्रेड करो या बेयर पुट स्प्रेड करो. मार्केट 100 पॉइंट्स तो ऊपर नीचे हो ही जाता है. और क्या करना है? कभी कभी उधर रह गया, कभी आप रॉन्ग गए, क्या? जब भी रॉन्ग जाओगे तो 2,000 लॉस होगा. उससे ज्यादा तो लॉस हो ही नहीं सकता. उससे ज्यादा तो लॉस हो ही नहीं सकता. So you have enough. 30% you are wrong. 30% you are wrong, and you can make this kind of a profit. Chalo, this may look to you as very optimistic. ठीक है? "26 weeks you are right, 26 you are wrong." 50% of the times you are wrong. 50% times you are wrong in your view. तो भी this will be plus 78,000. This will be minus 52,000. Still a profit of 26,000 of 25,000 in a year. पैसा डबल हो रहा है after going wrong 50% of the times. क्या चाहिए और? क्या चाहिए और कुछ सीखना है कि we stop it over here? क्या जरूरत है और कुछ करने का? Simply make a bull call spread or a bear put spread. एक वीक का टाइम है. Every Thursday you make a bull call spread. Every Thursday you square it off. उसको स्क्वायर ऑफ करो, मार्जिन रिलीज हो जाएगा. वापस कर लो. Every Thursday 3 o'clock को आप अपना अकाउंट ओपन करो. ओके, 2 मिनट में ट्रेड हो जाता है. हमारे अपस्टॉक्स के ऊपर तो एक ऐप जो है उसमें आपको सीधा बुल कॉल स्प्रेड लगाओगे, दोनों ट्रेड एक साथ हो जाएगा. ओके, दोनों ही ट्रेड एक साथ हो जाएगा. 100 पॉइंट्स का डिफरेंस, दोनों ट्रेड एक साथ. जब स्क्वायर ऑफ करना है तो उसको स्क्वायर ऑफ कर दो, दोनों ट्रेड एक साथ. 2 सेकेंड लगता है ट्रेड करने को. स्क्वायर ऑफ द अर्लियर वन, take a view, read some charts. I will show you how to read charts. Read the chart, take a view for the next week. Simple. Even if you go wrong 50% of the times, you still make this money. और 50% तो टॉस करके भी प्रोबेबिलिटी उतना हो जाता है ना. और क्या चाहिए?
assume अज्यूम करते हैं हम तो पनौती है, हम तो पनौती है। हम जब बोले कि मार्केट ऊपर जाएगा तो नीचे जाता है, हम जो बोलेंगे कि नीचे जाएगा तो ऊपर भागता है। ऐसा ही होता है ना आपके साथ। लेट्स से यू आर राइट फॉर 22 वीक्स एंड यू आर रॉन्ग फॉर 30 वीक्स। यू आर रॉन्ग फॉर 30 वीक्स, you are right only 22 weeks. Still, this will be positive 66,000. This will be negative 60,000. This will be positive 6,000 rupees on 25,000 rupees. Still 24% return on investment. और क्या चाहिए? You are wrong 60% of the times. You take a view and you are wrong. You take a view and you are wrong. फिर भी you will have 24% return in a year. चलो 24% छोड़ दो, अपने को तो एफडी को ही बीट करना है, राइट? लेट्स कीप 40,000 रुपीज विद अस। मार्जिन 25,000 है, लेकिन अपने अकाउंट में 40,000 रखते हैं हम। एक लॉट करना है तो 40,000 रखते हैं, क्योंकि यू डोंट नो विच वन यू विल बी रॉन्ग ना। अगर 4 वीक साथ में रॉन्ग गया तो पैसा कहां से आएगा 5th वीक के लिए, राइट? छाया, 6,000 इज वेरी लेस बट 40,000 इज ऑल्सो वेरी लेस ना। इन्वेस्टमेंट है अगर इसमें 4 करोड़ करने का, तो आपको उसके हिसाब से जीरो ऐड हो जाएगा उधर। हमारे पास पैसा कम है ना, इसके लिए ये हमें कम लगता है। अगर इधर पैसा ज्यादा है तो उधर ज्यादा ही मिलेगा। I don't know which ones you will go wrong. So I keep some buffer with me. Even if I am making 6,000 on 40,000, that is still 15% return. Isn't that 15% return good? अभी भी अच्छा नहीं है 15% return on investment? Better than your FDs, no? And if you want to do, as you think ये अगर आपको कम है, 4 लाख कर लो and 10 lots कर लो यहाँ पे। 40 लाख कर लो, 100 lots कर लो। I have no problem. The logic will not change. आपके ऊपर है कि आपके पास कितना रुपया दिया है, आपके पास कितना रुपया है इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। What you need is simply take a view. How to take a view? चलो इसके ऊपर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। I am not an expert on technical analysis, okay? I am not an expert, and I am teaching you because you are also not an expert on technical analysis. हमें तो बेसिक सीखना है, बेसिक। Therefore, अगर आप यहाँ पे कोई भी, मतलब we have it on our website also, on the अपस्टॉक्स के वेबसाइट पे भी आपको ये सब मिल जाएगा, ओके? बट अगर आपको ये सिंपली ये करना है, ओके, कोई भी आपने एक चार्ट का सॉफ्टवेयर ले लिया, सबसे फ्री में मिलते हैं, एंड इफ यू गो फॉर दिस काइंड ऑफ अ कैंडलस्टिक, मतलब चार्ट पैटर्न जो होता है, ओके, यहाँ पे एक इंडिकेटर है हाइकिन 80, दिख रहा है आपको? हाइकिन 80, ओके। अब ये जो चार्ट है ये आपका वीकली चार्ट है, ओके? ये वीकली चार्ट है 1 ईयर का। दिस इज हाउ द मार्केट हैज मूव्ड एक्चुअली।
व्हेन यू मेक इट हाइकेनशी, देखो किस तरह से दिखता है। ओके, ये कंटिन्यूसली आपको व्हाइट कैंडल्स दिखा रहा है, यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स दिखा रहा है, यहाँ पे व्हाइट कैंडल्स, रेड कैंडल्स, व्हाइट कैंडल्स। दिस is called a trend following indicator. I am not here to teach you हाइकेनशी, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, प्रोफेसर हूं, होमवर्क तो दूंगा। ओके, हाइकेनशी को आपको समझना है। यू हैव टू वर्क ऑन हाइकेनशी, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑब्जर्विंग हाइकेनशी। ओके, आप लोगों को एक्चुअली में इसके ऊपर रिसर्च करके कि हाइकेनशी ऐसा क्यों है। मैंने तो सिर्फ ये देखा है कि हाइकेनशी आपको सिर्फ ट्रेंड दिखाता है, और ट्रेंड का मतलब क्या है? दिस इज अ वीकली चार्ट, दिस इज ईच कैंडल रिप्रेजेंट्स 1 वीक। ओके, तो मुझे तो जब रेड हो जाए तो मैं तो बेरिश व्यू बनाने वाला, सो आई विल मेक अ बेयर पुट स्प्रेड। जब जब ये एक रेड हो जाए, सॉरी व्हाइट हो जाए, तब तक मैं तो बुल कॉल स्प्रेड बनाने वाला। ओके, सो यस देयर विल बी चांसेस। जब यहाँ पे था, ओके, सो आई डिड नॉट नो कि ये यहाँ से ये रेड देखा था, तो आई डिड नॉट नो ना ये क्या होगा, तो मैंने बेरिश ही व्यू किया होगा, बट बुलिश हो गया। सो आई विल बी रॉन्ग ऑन दिस वीक। यहाँ पे आई वॉज बुलिश, मुझे ये थोड़ी पता था कि ये इधर से रेड हो जाएगा। ओके, सो आई मेड अ बुल कॉल स्प्रेड, बट मैं रॉन्ग गया एंड इट वेंट नीचे। नेक्स्ट वीक से बेयर पुट बनाने का। ओके, अपने पास 60% ऑफ द टाइम्स इफ यू आर रॉन्ग, दैट इज ओके। यहाँ पे 60% ऑफ द टाइम्स यू विल नॉट बी रॉन्ग ना। आप कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7, एक पूरे साल में 10-15 बार भी रॉन्ग गए, आपका तो काम हो जाएगा। बाद में दिमाग नहीं लगाने का, बाद में दिमाग नहीं लगाने का, जस्ट फॉलो व्हाट द इंडिकेटर इज सेइंग। देन इफ यू ट्राई टू मैनिपुलेट द इंडिकेटर, देन इट विल वर्क समथिंग वियर्ड वे। ओके, सिंपल है। ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर, आरएसआई, एमएसीडी, जो भी आपको ठीक लगे उसको फॉलो करो। एक ही इंडिकेटर को फॉलो करो, जो आपको बोले वो करो, उसके बाद दिमाग मत लगाओ। एंड करो क्या, व्यू इसके ऊपर से लो, बट करने का क्या, बुल कॉल स्प्रेड या बेयर पुट स्प्रेड। कितने पॉइंट्स का? 100 पॉइंट्स का, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, ना 50 पॉइंट का लेने का, ना 200 पॉइंट का लेने का। हाँ, अगर श्योर हो कि हाँ बहुत मूवमेंट आने ही वाला है, कर लिया एक आध बार तो दैट इज ओके, बट आइडियली वीकली ऑप्शन है 100 पॉइंट का करने का, दैट इज गुड इनफ। ज्यादा बड़ा स्प्रेड नहीं करने का। इज दिस अंडरस्टूड? स्ट्रेटजीज क्या होती है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या करना है, कल से अगर ये करना है तो यू कैन स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग। बैंक निफ्टी में करना है तो 200-300 पॉइंट्स का करने का, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इतना पॉइंट्स का मूवमेंट आना चाहिए। So Elvis, if you can take a support, resistance, all these things, be my guest. If you can predict and be more successful, I have no issues. I am just saying this for a layman जिसको कुछ नहीं आता है, पहली बार ये स्टॉक मार्केट का सेशन अटेंड करने को आया है। सिंपली इसको फॉलो करो, ये भी फ्री में है। ओके, बुल कॉल स्प्रेड, बेयर पुट स्प्रेड में ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके, सिंपली ये व्यू लो, एक बुल कॉल स्प्रेड या बेयर पुट स्प्रेड ट्रेड मारो, वेट करो पूरा वीक, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, स्क्वायर ऑफ करो,
नेक्स्ट वीक का व्यू लो, नेक्स्ट वीक का ट्रेड लो, देन अगेन वेट फॉर 1 वीक. सिंपल सिंपल. और कुछ चाहिए? So you should work in Nifty and Bank Nifty only. The reason is very simple कि एक साल में only Nifty and Bank Nifty will give you 52 expiries. Bull call spread, bear put spread is an expiry based strategy, right? तो expiry based strategy के लिए expiries तो चाहिए. अगर आपने stocks पे किया तो मंथ में एक ही बार expiry आएगा, तो पूरे साल में 12 बार ही strategies कर पाओगे, only 12 times. Okay. अब उसमें 12 times में से then you will look at the probability. I don't know what will be the profit or loss. But when you have a 52 weeks in 1 year, so the probabilities of going right can be managed. Correct? इसके लिए you should stick to Nifty and Bank Nifty. Right? अब कभी भी देख लो, ये जो स्प्रेड्स है वो वही रेशियो में रहेंगे. 2:3 का रेशियो रहेगा. या तो 40 जाएगा या 60 आएगा, या तो 2 रुपीज जाएगा या 3 रुपीज आएगा. यू कैन डू दिस इन करेंसी, यू कैन डू दिस इन कमोडिटीज. आपको जिसमें भी करना है, बुल कॉल स्प्रेड का लॉजिक सेम ही रहेगा. बट इन इंडिया हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज द मोस्ट लिक्विड आइटम, एंड इसीलिए हम उसमें ही करते हैं. सो स्क्वायर ऑफ करना भूल गए तो, अरे भूल क्यों जाओगे यार, पैसा लगाया अपना, भूल कैसे जाओगे? सो अगर आप भूल जाते हो तो एक्सचेंज आपका स्क्वायर ऑफ कर जाए. अब स्टॉक्स को स्क्वायर ऑफ करने का जरूरत नहीं पड़ता है. ओके, एक्सचेंज आपका स्क्वायर ऑफ कर देगा. ओनली थिंग इज कि आपका जो टैक्स है वो बहुत बड़ा होगा, बिकॉज एसटीटी जो लगता है वो प्रीमियम पे नहीं, वो अंडरलाइंग एसेट के ऊपर लगेगा. तो अगर आपका कॉल 200 रुपए का है, आपने 200 रुपए में बेचना भूल गए, ओके, तो 200 रुपए की जगह पे जब एसटीटी लगेगा तो 19,500 प्लस 200, 19,700 पे आपका एसटीटी लगेगा. सो 200 रुपए का एसटीटी देना है कि 19,700 का एसटीटी देना है, दैट यू डिसाइड. yes, bull call spread can be applied to gold options also. The only thing is, जैसा मैंने बोला, you will not get 52 weeks expiries. ओके, उसमें 12 ही होंगे ना, पूरे 12 महीने का 12 एक्सपायरी होगा. स्क्वायर ऑफ कब करना है? थर्सडे को 3 बजे. ओके, थर्सडे 3 बजे अपना अकाउंट खोलने का. खोलने में 2 मिनट लगेगा. मार्केट देखने का, व्यू देखने का, ऑन द आइकन वगैरह सब देखने का, क्या व्यू है, बुलिश है कि बेरिश है फॉर द नेक्स्ट वीक. फिर 3:10 हो गया होगा तब तक आपको जो पुराना वीक है उसका जो है उसमें या तो प्रॉफिट होता होगा या लॉस होता होगा, उसको स्क्वायर ऑफ कर देने का. ओके, तो 3:15 तक आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया. फिर नेक्स्ट वीक का जो व्यू है उसके बेस पे ट्रेड कर देने का. 3:20 तक आपका सब ट्रेड हो गया. सो 3 o'clock को स्टार्ट करने का, 3:20 तक सब वाइंड अप हो जाएगा आपका. फिर सीधा नेक्स्ट थर्सडे आने का. बीच में रोज देखने का नहीं, अरे मार्केट में ये हो गया, अरे वो हो गया, अरे जीएसटी में होगा, अरे फेड में ये किया, अरे चाइना ने ये किया, सब भूल जाने का. अगर वो सब आता था करने को तो बहुत कुछ है ना करने के लिए. वो सब नहीं आता है, इसीलिए तो ये करना है. सो आवर एम, and please be very clear about your objective. Are you here to make money, or are you here to prove that you are intelligent? I'll leave you with this thought. Are you here to make money, or are you here to be right and prove that you are intelligent and you can tame this market called the stock market? Okay, see you tomorrow. Have a nice day. Thank you.